Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. This is Priyanka Barua and today in this video we are going to learn class 6 NCERT science subject. Today we will discuss about the topic which is most basic need of our life. I hope you all have guessed the topic, right? Yes, it is food. So today we are going to learn chapter 1, that is from your NCERT textbook, that is food, where does it comes from. As this chapter is quite lengthy, so I have divided this chapter into two parts. So today in this video we are going to deal with part 1. Okay, without wasting the time, let's get started. Before getting into the lesson, I just want you to imagine what happens when you don't have your food for 2 days. Thinking? Think. Okay, your answer will be I feel weak, always feel sleepy, don't have energy to do any work. Right? Okay, now tell me, why do we eat food? हाँ हाँ पता है हमें भूख लगती है. But what is the requirement of food in our life? कहीं आप लोग का आंसर इनमें से तो नहीं है. अच्छा मान लो अगर कार में डीजल या पेट्रोल ना हो तो क्या वो कार चलेगी? नहीं ना. उसी तरह हमारे शरीर को भी खाने की ज़रूरत है. अगर हम अच्छी तरीके से ना खाए तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी कोई भी काम करने के लिए. समझ आ गया? चलो अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ. डिफाइन फूड और व्हाट इज फूड. सोच में पड़ गए? अरे इसमें सोचना क्या है, आपका आंसर तो यही है. Just that you have to write it in a systematic form. So for define food, your answer will be food is basic necessity of our life which gives us energy to do daily activities in order to maintain good mental and physical health. Isn't it simple? Yes. चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर. We are going to discuss on these topics, that is first topic is food variety and their ingredients. Second topic will be food materials and their sources. Under this we are going to learn about types of sources of food. Okay, there are two types of food. And the third topic will be plant parts as food. And at last we are going to do one activity. अब फूड की बात हो रही है तो हमें पता है दे आर वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, राइट, विच वी लव टू ईट. मानिए अगर आपको सुबह शाम एक ही तरह की खाना दिया जाए तो आपको क्या खाना पसंद होगा? चलो ब्रेकफास्ट में तो ठीक है, लंच में ठीक है, अगर डिनर में भी आपको सेम तरीके का खाना दिया जाए तो आपको पसंद होगा? नहीं ना, आप बोर हो जाओगे सेम तरीके का खाना बार बार खाने से. इसलिए हम सभी को डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड. ये भी सच है जब इतनी वैरायटी खाने को मिलती है तो भला हम क्यों ना खाएं. पराठे में भी कितनी वैरायटी होती है. आलू के पराठे, प्याज की पराठे, गोभी की पराठे. चटनी में भी टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, मिर्ची की चटनी, पिकल्स, कितनी वैरायटी मिलती है ना. चिकन में भी चिकन की कितनी, बटर चिकन, चिकन लॉलीपॉप, चिकन 65, चिकन स्टार्टर्स में भी कितनी वैरायटी होती है. पनीर में भी पनीर दो प्याज़ा, पनीर की डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सब्ज़ी, राइट. चलो ये तो बात हो गई है वैरायटी की. चलिए अब बात करते हैं फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. सो इन दिस टेबल यू कैन सी food items and their ingredients. Can you observe something? You can observe that in few items there are few ingredients and in few items there are multiple ingredients. For example, boiled rice, इनमें सिर्फ दो ही ingredients है, right? एक है raw rice और एक water. रोटी और चपाती भी ले लीजिए, इसमें आटा और वाटर, ओनली टू इंग्रेडिएंट्स आर देयर. इन वेजिटेबल करी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स. सॉल्ट, स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले, कितने मसाले, और ऑयल.
दाल ले लीजिए, दाल के लिए कोई भी पल्सेस या कोई भी तरीके का दाल ले लीजिए, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। क्लियर? फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स एक या दो होते हैं, तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस, जो हमारा टॉपिक भी है। Where does this food materials comes from? What are the sources of this food? What are the different types of sources from which we get this food? What are the sources of fruits, vegetables, rice, wheat? What are the sources of food items like egg, meat, and milk? Now we will talk about the first source of food, that is plant sources. As you can see in this picture, the parts of the plants. Okay. At the down you can see the root part where there is primary root, okay, and the secondary root. Secondary root matlab the roots which are growing from the primary roots are called secondary roots, and this total primary root and secondary root together called as root system. And above you can see there is flower, fruit, stem, leaf, bud. This all together leads to shoot system. Now we will talk about different edible parts of a plant. Edible मतलब eatable parts, okay, जो हम खा सकते हैं. Now we all know that plants are one of the sources of our food, and they are parts of the plant which we eat. For example, flower, fruit, stem, leaf, bark, roots. बट ये मत सोचिए कि हम प्लांट्स के ये सारे पार्ट्स खाते हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके हम कुछ पार्ट्स खाते हैं, मीन्स कुछ पार्ट्स एडिबल होते हैं और कुछ पार्ट नॉन एडिबल होते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर द क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स बेस्ड ऑन एडिबल पार्ट्स. ठीक है ना, यहाँ पे आपने लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, सीड्स, रूट्स, बल्ब्स, स्टेम्स. Under leaves you can see all the leafy vegetables. Leafy vegetables मतलब स्पिनच, सरसों, ठीक है ना, सरसों का साग भी आता है, कैबेज आता है, ठीक है. ऑल द लीफी वेजिटेबल्स कम्स अंडर एडिबल पार्ट ऑफ लीव्स. फ्रूट्स में तो हम जानते ही हैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स है. इवन ब्रिंजॉल. रूट्स से हमें क्या वेजिटेबल्स मिलती है? फॉर एग्जाम्पल onion, carrot, beetroot, radish. This all comes under roots. Stems. Stems से हमें क्या मिलता है? Sugar cane. Under seeds. Under seeds सारे डाल्स आ जाते हैं, ठीक है ना, all the grains. Then you can see peas, beans. This all comes under seeds. Flower में cauliflower, broccoli. अब बात करते हैं कुछ प्लांट्स के बारे में जिनमें 2 से अधिक एडिबल पार्ट्स होते हैं. एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट, जिसे हम सरसों कहते हैं. उस प्लांट के हम लोग सीड्स कंज्यूम करते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर. वी ऑल्सो कंज्यूम ऑयल, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल कहते हैं. वी ऑल्सो कंज्यूम लीव्स. ओके, वी कंज्यूम इट एज अ लीफी वेजिटेबल. नेक्स्ट कम्स बनाना प्लांट. बनाना प्लांट के एडिबल पार्ट्स है इनर स्टेम, फ्लावर, रॉ बनाना एंड राइप बनाना. इनर स्टेम, फ्लावर और रॉ बनाना, इनको हम एज अ वेजिटेबल वी कंज्यूम, एंड राइप बनाना वी कंज्यूम इट एज अ फ्रूट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फेनुग्रीक प्लांट, जिसे हम मेथी कहते हैं, मेथी दाना. एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेयर एंड ऑल्सो स्किन. तो इसके एडिबल पार्ट्स है स्टेम, सीड्स, लीव्स. इसे हम तड़के में भी डालते हैं, है ना, और इसके हम लोग लीव्स कंज्यूम करते हैं एज अ वेजिटेबल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कोकोनट. वी ऑल नो द बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट वाटर, हाउ हेल्दी इट इज़ फॉर आवर हेल्थ. वी कंज्यूम कोकोनट वाटर, वी कंज्यूम the white part inside the coconut, and we consume the oil, and we also apply oil to our hair, which is very good. We also consume coconut oil. Now we will discuss our last topic, that is our activity.
मैं बस डिस्कस करूँगी, करना तो आपको ही पड़ेगा ना। इसके लिए हमें करना क्या है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, ये आपको इजीली अवेलेबल होगा किचन में, ठीक है ना। And then the next step will be put some quantity of seeds. Take a small quantity of seeds. Okay, seeds मतलब मूंग या कोई भी चना दाना. A container with water and leave this aside for a day. Next step क्या है? Next step है drain the water completely from the vessel, leaving behind the seed. Seeds को नहीं फेंकना है, सिर्फ water को हम लोग को drain out करना है. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आप लोग को, लेकिन आप लोग को क्या करना है, उस वेजल को वेट क्लॉथ से टाई अप कर देना है जिसमें आप लोगों ने सीड्स रखा है, एंड लीव इट फॉर 2-3 days. What you will observe, you will observe some changes, right, in the seeds. What changes you will observe? You will observe that a small white structure will grow out of the seeds, or will the seeds have germinated. What we'll call that? Call it as sprouts. Now the seeds are converted into sprouts. As you can see in this picture, I have kept the before and after picture. The first one is your lal chana ya kala chana, and the second is your moong dal. So in the before picture you can see only the seed, but in the after picture you have observed a small change, right? What is that change? You have seen that a white color small structure have grown out of the seed. What you call that? You call it as sprouts. You can see the same thing with the moong dal. The topic is clear. अब आपको करना क्या है, आपको करना है ये activity at home. And when I'm going to meet you in my next video, you have to experience किया है, ठीक है ना? I hope you all have understood the concept, right? If you have any queries related to the concept, you can comment below. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो please do like, share with your friends and subscribe to my channel. And you can follow my Instagram and Facebook channel. I'm giving the link in the description box. Thank you.